See, when I select this is the uh, sh- okay, show in profile, hide. See, you see this is your profile. You can Yeah. just zoom extend on that. Okay, what is the level? See what level you want to check on that. Okay, 1:10 on that case. Okay, Mm. see, you want to off this one. Just say active. If you want to active, you can active it. Otherwise not necessary. Active means you know that thing na, whether it is Mm. coming somewhere is the, your element where you're running na, it will be show. See, Mm. okay, okay, I need to close this one. See, there is the option you can select the existing horizontal. Once you select, you can just zoom and see there is one option is there. This is the recreate the profile or drift profile. Drift profile means it is the along the your ground minimum cut and filling is coming. Okay, Okay. Yeah. recreate means it is the taken on standard level. Okay, see, I Yeah. will show you. On some standard level, it is using that design. See, this is the some standard level is taken. Some cut and filling is more cases. So as like we are engineers, we thinking wherever need to cut and filling on that. You can approximately you can based on this profile that is the 220 means 1, 2, 3, 4, Yeah. 240. Okay, means every 5, 225, 230, 235, 240 every 5 meter. Based on that we can analyze that one. Instead of there is no other method. What my understanding on that. Yeah. Yeah. Okay, just like in you can measure on that. What is the in profile we are checking na? What is the depth in Mm. between that, or you can Mm. check the elevation on that. Mm. Okay, there is no that like if is not option. I did not find in this case. Okay. Okay, there is the another drawback is there. You can't export the subassembly composer assemblies also in this case. Okay. Okay, there is the two drawback what I find on that one. Okay. And can we export the geometry file, Yeah, you can export. You can export. the vertical geometry, horizontal geometry? Everything. Oh, we exported See, it. yeah, I will show you one things. One Okay. second. Just I will delete this one because this is the bigger element. Na? Okay. Okay. We can't. Our model is too huge. So I make a small element. Uh, See, I use the generally we prepare the compound because that is they have the your geometric data. Okay. See, you mentioned the name of the road. I mentioned name of the road is the national expressway. Okay, expressway or urban, sorry, in arterial road, arterial road. Huh? Okay, Bangalore, Yeah. Bangalore. Okay, arterial road. So I am talking about which you want to arterial road. I selected. Okay, what is the speed of that? 50. Mm. Okay, I mentioned this is the code. If you want to different code, you can install on that. How to already explain. If you forget, I will again. I will explain to you. Not an issue to me. And what is the cut and filling? You know that things. All this filling, cutting. I mentioned Yeah. this one. Filling. I mentioned green color. Okay. What is the grade limit? Grade is with respect to slope. Generally, we with respect to slope. Na wherever Mm. the your RW is coming, you go to the fixed width. Okay. I mentioned that one only. Generally, we can 2:1. You can also mention the 2:1. Okay, is Okay. once you can okay, and you can calculate this, you can calculate, otherwise you can kept the same thing. Okay, just wait. Just you can run once. Okay, leave it for cut and filling how much is coming. Okay, now see, you can just there is no option to save on that, but however you can take snapshot because every time we can't sorry, every can't we not the bigger model we can't search where is our road is there. Okay. Okay, Okay. Yeah. arterial road one. Hmm, add. Okay, it is okay. That is not necessary for Can you me. repeat again? How can you do Snapchat? See, सिंपल यू Okay. वांट टू योर रोड दिस वन. ओके, इसमें Okay. क्या आता है ना, बहुत कुछ रोड्स रहता है, आपको Mm. बार बार अब ढूंढना पड़ता रहता है. इसके Yeah. लिए क्या करना पड़ता है, सी यू कैन जस्ट जूम. ओके, जूम आपको कितना एक्सटेंड, मुझे इतना Okay. नजदीक है तो अच्छा रहेगा. आपको कितना एक्सटेंड है देख लो. Mm. उसका बेसिस को आपको कौन सा साइड का चाहिए देखा. अभी मैं इधर का ऐसा रख रहा हूँ. मैं Mm. इधर लेकर मैं क्या करता हूँ, एक स्नैप लेता हूँ. जस्ट Okay. ठीक है, ऐड ऐड बोल कर लिख दो बस. Right. हाँ, Yeah. मैं अभी कहता आर्टेरियल रोड्स.
रोड 1, ओके। Yeah. हाँ, अभी देखो अभी मुझे ये डिलीट कर दो आप, ओके, डिलीट कर दो। अभी मैं क्या करता हूँ, ओके, सेलेक्ट कर देगा, हो गया। अभी मैं क्या करूँ, होम पे रख दो। अब मैं इतना में मॉडल किधर ढूंढूं मैं, और Mm-hmm. दूसरा बंदा कैसा मालूम होगा कौन सा रोड किधर है। Mm-hmm. तो जस्ट उसको ऐसा कर दो, मालूम हो जाता है। ओके, ये होने के बाद कुछ नहीं है, आप जस्ट इसका यूनिट फिक्स करने का ना हम, Okay. Yeah. जियो कोऑर्डिनेट का। ओके, इसमें क्या यूटीएम 48 ऑलरेडी मैं प्रीवियस फिक्स कर चुका था, इसके लिए ये दिख रहा है। इसको एक याद रख लो। उसके बाद क्या करो, इसको आ जाओ, उसको बेटर क्लोज करो तो अच्छा रहेगा, बिकॉज समटाइम एरर लेता है वो। कभी देखो आप इंफ्रा सिविल 3D में इंपोर्ट करता है ना, जब Mm. इंफ्रावर्क क्लोज रहने का, इंफ्रा सिविल 3D से इंफ्रावर्क जाने का जरूरत प्रॉब्लम नहीं, इशू होता है। वो कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है उस लोग का, वो ऐसा कोई इशू होता है, वो समझ नहीं है उनको। ओके, अभी क्या करो, देखो अभी आप इंसर्ट में तो आ जाओ, नहीं तो मैनेज में तो आ जाओ। सॉरी, इंसर्ट इंसर्ट में आ जाओ, नहीं तो मैनेज में एक ऑप्शन है, उसमें से व्यू 1 सेकंड, दो दो तीन ऑप्शन आते हैं। Mm. इंसर्ट में तो आता है, इंसर्ट में एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, और Mm. इंफ्रावर्क, इंफ्रावर्क में भी है। ओके, Okay. अभी आप क्या करो, इंसर्ट में आ जाओ, इंसर्ट में आ जाओ, इधर देखो मॉडल, हाँ, मॉडल, मैनेज द मॉडल डेटाबेस। ओके, इसको इसको ओके, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद इसमें क्या क्या आपको चाहिए वो क्लिक कर सकते हैं। Okay. ओके, व्हाट आर द डेटा यू वांट टू एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट, आपको सब चाहिए, क्या चाहिए। ओके, मुझे क्या है ना, पहले प्लानिंग रोड जरूरत नहीं है, यूटिलिटी का पब्लिक यूटिलिटी नहीं, टेरेन सरफेस चाहिए, इंटरसेक्शन जरूरत नहीं है, कंपाउंड रोड चाहिए, कवरेज, वाटर बॉडीज, ब्रिजेस भी जरूरत नहीं है, टनल की भी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट जियोमेट्रिक ये भी नहीं है। ओके, ये कर दिया, ओके, ये कर दिया। ये करने के बाद ओके, इसमें डिजाइन सेव फॉरवर्ड, ओके, वो राइट कर दो, उसका चलता है। अभी क्या है, इसको क्लिक करो। इसका करने के बाद देखो, आपका मॉडल का नाम आपको मालूम रहता है ना, Uh-huh. go that before that you are going to that one na, you need to fix your unit for this, Okay. come to that, edit, हम लोग इधर किया है क्या, यूनिट्स नहीं किया है, सही है ना, आप कर दो Yeah. यूनिट 84। अभी ये हो गया ना, ये होने के बाद आप बिफोर अप्लाइंग आप एक बार चेक करो कोऑर्डिनेट्स क्या है। ओके, Yeah. मीटर में है, इट्स ओके फॉर दैट, ओके, क्लिक करता हूँ। अभी क्या करने का ना, ये डायरेक्टली इसको ऊपर क्लिक करो। करने के बाद देखो, अभी इसमें सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद देखो, कभी भी कौन सा भी लैपटॉप रहने दो, कौन सा भी रहने दो, उधर Mm. क्या रहता है ना, डॉक्यूमेंट में आ जाओ। Mm. जनरल डॉक्यूमेंट में, इसमें ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट में सेव होता है कौन सा भी मॉडल का ये रहना। Okay. ये देखो, ऑटो डिस्क इन्फोवर्क मॉडल है, वो इन टर्म्स ऑफ कभी क्या रहता है ना, Mm. वो कभी भी इन टर्म्स ऑफ इसमें रहता है, नंबरिंग में रहता है। Okay. Okay. ओके, अभी हम कौन सा किया था, हम अभी मुझे भी वो ये है, सही है ना। देखिए, इसमें देखो, कभी क्लाइंट को शेयर करता है ना आप, Yeah. Yeah. you can share both file, not single files. Okay. Okay. If you share this one, this is not working. Okay. You Okay. need to share both file. Okay, just I will open that one now. Okay, एक बार ओपन होने के बाद सीधे इसमें देखो, इसमें आप ऑटोमेटिक ले रहा है, नहीं तो इसमें क्लिक करेगा ना, इसमें 3 ऑप्शन आता है। यूज द इन्फोवर्क मॉडल टू सिस्टम, ये अभी यही ऑप्शन लिया है, बिकॉज ऑफ रीजन इन्फोवर्क मॉडल में भी था, हमारा भी इधर सेट हुआ था। अगर जी. सेलेक्ट द कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ड्राइंग, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो यूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूटीएम 8446, उसको किधर से एक ऑप्शन में उसको वो कोऑर्डिनेट फिक्स करना पड़ता है। जी. ओके, जी. अभी देखो यूसीएफ में हो गया। अभी कौन सा ऑब्जेक्ट लाने का है, आप इधर में टिक कर दो। देखो, अभी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए यार, मैं क्या करता हूँ, ये टनल को हटा देता हूँ, राउंड अबाउट ब्रिजेस, वाटर वे, ड्रेनेज नेटवर्क नहीं चाहिए मुझे, इंटरसेक्शन कंपाउंड डिजाइन रहने दो, प्लानिंग रोड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस इतना दे, जेनरिक ऑब्जेक्ट रहने दो, कुछ नहीं होता है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ओपन द मॉडल। ओके, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपको मालूम है ना, आपको कितना एरिया चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं मॉडल में, Yeah. पर जनरली वो हम लोग इसके लिए नहीं सिलेक्ट करता है, बिकॉज हमारा पहला ही हम डिफाइन कर चुका रहता है। Okay. ओके, अभी देखो कौन सा रोड आया है, आई डोंट नो दिस इज द रोड वी डन आर नॉट। ओके, इतना रोड है हमको अभी। ओके, Okay. Okay. बट इसमें मेरा रोड का मॉडल आ रहा है, इधर देखो Yeah. सरफेस आ रहा है। Mhm.
प्लानिंग रोड का। देखो अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, ऑब्जेक्टिव व्यूअर्स में जाऊंगा ना, हाँ, ऑब्जेक्टिव व्यूअर में जाएंगा ना, मैं देखो अब सिविल 3D में इसके बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको। हम्म। और एक खास से तो बहुत बोलूँ, इफ यू आर डूइंग द डिजाइन ना, बिफोर गोइंग टू द डिजाइन यू कैन या क्रिएट ए मॉडल। या आपको लॉट ऑफ करेक्शन इधर कर सकते हैं आप। हम्म, इधर देखो, uh, yeah. एक सेकंड Actually, ये, one thing. हाँ, आई विल कम टू योर जियोमेट्रिक पार्ट आल्सो, वन सेकंड। Yeah. देखो अभी एलिमेंट कौन सा था, एलिमेंट में आ जाओ, सेंट्रल लाइन एलिमेंट में आ जाओ। अभी मैं इसमें देखेगा कौन सा एलिमेंट है अभी। इसमें ये कौन सा है, Right. Four. Element four is there. कुछ तो है, एक सेकंड वी कैन सेलेक्ट, हाँ ये यही रहेगा Yeah. लगता Right. Yeah. Select. है, यस दिस वन, ओके। सी गो टू द जियोमेट्रिक एडिटर, इसमें Okay. That's it. जियोमेट्रिक Okay. कुछ ट्रैक किया देखो। हम लोग कुछ नहीं ये नहीं किया है हम लोग, ओके, ऑटोमेटिकली इट इज टेकन एवरीथिंग्स। Yeah. Yeah. Okay, this is the things how do you do. Radius also it is roundabout that their self only. Okay, you want to edit you can change also change. And see इसमें इतना ही difference है, you can just you want to suggest for that, but ये आ गया, ये तो आ गया, कॉरिडोर है ये, आपको इसका असेंबली भी चाहिए ना, जी जी. उसका असेंबली इधर है रहता है, देखो बहुत छोटा में रहता है, अब ढूंढना पड़ता है Okay. उसको। Assembly also imported. हाँ या असेंबली also you can get. Yeah. Okay, you how to you corridor is done based on that your assembly is created. Okay. Okay. Okay, हमारा element somewhere one sided आ रहा है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है वो। Yeah. Hope you get your clear your doubts. Yeah. Doubt Yeah, clear. next doubt। And the same thing, Civil 3D to Infrawork. हाँ वो क्वेश्चन को अभी आंसर देता हूँ। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे तो मालूम हो गया है, आई नीड टू शेयर दिस वन, I need to share somewhere name. What is the Infrawork is name? We can kept that one only. That is the best idea. Okay, best practice instead of idea. Okay, best practice. अभी मैं क्या करता हूँ, नाम क्या दिया तो देख लेता हूँ, वो मॉडल का नाम वही रख देता हूँ इधर। It is helpful to me to import for that. ACRC V2 लिखा था मैं, ओके। हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ACRC V2, ओके, V2 रखता हूँ मैं, ओके, सेव करता हूँ, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, I draw one element, ओके, I draw one element, create the element, मैं लिखता हूँ element NH 65 something, and I mention that one, okay. I want to, you can make a region or anything series, otherwise you can okay for that, okay. Just I want to draw one road, okay, with respect to this, okay, huh? Same I know that this name of the only element बनाया हूँ मैं, इधर कुछ नहीं बनाया हूँ, okay. I just save these things, okay. You know that one, our model, we need to open our model, Okay. okay. मैं क्या करूँगा, see now I can see either you can come to this. See, I don't know which data, where is that one, we need to import that one, okay. Just you go to that one, just see this is the which format of your file is there, okay. I have AutoCAD Civil 3D, okay. AutoCAD Civil 3D, in this case I go to the where is that my file, okay, and this one is there, I just import. See, we know that all these things, V2 existing road exists, I don't want to this one, I don't want to this one, okay. I don't want to corridor coverage and proposed ground, okay, key roads only, okay, okay. And now I go to the configure, okay, you can just double click on that. Yeah. If road is moved to another location, try to the data format. One second, sorry.
And now we configure the road. Okay, which assembly style you want to. I want to select somewhere in this. Okay, so you can this one check in the compound on that one. Okay, just you go to the see my corridor is my road is also coming NH65. Yeah, 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 yeah. Okay, now geolocations not necessary, these are these things. Okay, if you want to drift you can drift, but not necessary, just like our previous I tell na, that one. Yeah. Okay, so I don't want all other things, just go to come. You don't put a okay, just close and refresh. Once you configure, it is showing some road. Okay, okay. I just click on OK and then this thing happened with me. See boss. Yeah, the connecting road link and has been come right now. Okay, Yeah. see now, see this is the road what we done. Yes. Yeah, now what I do, I did not done any things. Automatically it is corridor created, na. See, Mm-hmm. everything is cleared. There is no now you can fix this one. You can Yeah. fill this one. Okay. Okay. Now you are going to the fixed slopes. Okay, everything is there. Your radius is there. You can just mention the expressway. Okay, freeways. Okay. Now NH65 you can just calculate this in again. You can see, you can see this one. Okay, now what I do, again I need to close this one. Okay, huh? Yeah. Because now you can import it into that area na. Okay, Mm. just you can come to this one. Okay, just we can try now. 1 2 3 we go to the arcgis. Okay, okay, now what I do, I will delete this file, I don't want to this one. Okay, hmm? Now I import, go to the insert, import. See, I selected this one. Okay, set as. See, I need to close this one. Some error is coming. Yeah. See, when it is open, that's why it's showing the error. When I close Infrawork, it is showing automatically. See, I deleted my existing element. Okay, what I draw in this corridor previously. I am not done any assembly, anything. Everything is there. Okay, okay. Yeah, everything Okay. has been come now. Okay, now you come to your corridor. ये कॉरिडोर बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? Yeah, yeah, See, yeah, tomorrow I share the one file. This is yeah. the only that one, and another intersection. This one. This is the Okay. simple project to you tomorrow. Case one. Yeah. I share with you only central line element, offset of alignment. That one. Both of us. I am also with you in tomorrow class. Okay. We need to create the one corridor and junctions, everything on that. Okay. Okay. Okay, boss. Okay. Huh? Okay. Okay. Thank Okay. you. Okay. Thank you.